Assalamu alaikum students. I am Amir Hamza. Today I am going to discuss different concepts of cell biology. I am going to start with my videos with the concepts of cell biology. So it is the course content of uh, cell biology as well as molecular biology, whom we study in different universities of Pakistan. It is recommended by HEC. So here you can see it's another page. These are recommended books for this course. Actually, I am following Albert's Essential Cell Biology. So let's start with cell biology. What is cell biology? Cell biology. Before studying cell biology, I am going to discuss what is cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. We studied it in FSC, we studied it in matrix. Similarly, we also studied it in preliminary stages of the university. So actually it's the basic structural and functional unit of life. So what is cell biology? The branch of biology which deals with the study of the cell is known as cell biology. So what we study in cell biology, we study about the structure, function, molecular organization, growth, reproduction and genetics of the cell. And we also call cell biology as cytology. There is diversity of cells. What does it mean? Actually, there are different types of cells which are present in different organisms. For example, if I discuss the example of the humans, there are different kind of cells present in case of human. For example, epithelial cells, moreover nervous cells, muscle cells, and many more. Similarly, there are two kind of organism. One are single-celled organisms. The other one are complex organisms. What are single-celled organisms? Single-cell organisms are prokaryotes. Actually, only one cell makes the body of the single-celled organism. Similarly, what are complex organisms? For example, he talked about humans. So actually complex organisms are those organisms which are composed of different types of cells, and they have complex organizations of their body. uh, मतलब ये कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, बहुत सारे सेल्स डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलकर डिफरेंट ऑर्गन्स बना के एक स्पेसिफिक ह्यूमन क्रिएट कर देते हैं। तो उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सोलेटरी बैक्टीरियम को देखें तो वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ बैक्टीरियम, but in case of complex organisms, trillions of the trillions of the cell organized together to form the body of the organism. Okay, so I am moving towards the next concept, that is cell contained machinery. Basically machinery ऐसी तमाम चीज़ों को कहते हैं जो किसी भी सेल में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस मेंटेन करने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड्स, सिमिलरली cytoskeleton and many other components of the cell or different organelles. And actually what is the function of that machinery? And the first main function of that machinery is to gather raw materials from the environment. What does it mean? सेल को सरवाइव करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए एनर्जी लेने के लिए, तो उसे इन्वायरमेंट से इकट्ठा करना है. अगर उसके पास मशीनरी नहीं है तो वो कैसे इकट्ठा कर पाएगा? तो इसके लिए अगर सेल को सरवाइव करना है तो उसे स्पेसिफिक मशीनरी चाहिए. तो सिमिलरली आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट.
एक ऐसी मशीनरी भी होनी चाहिए जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सके। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। नो व्हाट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेल बायोलॉजी? एंशंट ग्रीक फिलासफर था अरिस्टोटल और प्रेसिलस। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स होएवर कॉम्प्लिकेटेड। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये ताहम कॉम्प्लिकेटेड हैं, मेन पेचीदा हैं। आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विच आर रिपीटेड इन ईच ऑफ दैम। ये कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करते हैं जो कि उनमें रिपीट होते हैं। मीन डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ एक्चुअली वो या ऑर्गन्स वो ऑब्ज़र्व कर सकते थे। उस वक्त माइक्रोस्कोप ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो जो चीज़ आम आँख से नज़र आ सकती है उसको उन्होंने देखा कि जो मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमन स्टमक की, तो ह्यूमन स्टमक के सेल आलमोस्ट सेम काइंड के थे। तो उन्होंने इससे एक मफरूज़ा बनाया, एक हाइपोथेसिस जनरेट की कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स हाउएवर कॉम्प्लिकेटेड आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विच आर रिपीटेड इन ईच ऑफ देम। So I hope this, I hope you get this point. So I am moving towards the next point, referring to macroscopic structures. What is difference between microscopic structures and macroscopic structures? Macroscopic structures are those structures whom we can see without the help of lens or without the help of microscope. And what are microscopic structures? Microscopic structures are those structures whom we can't see without microscope or lens. ऐसी तमाम वो चीज़ें जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते उनको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और वो तमाम चीज़ें जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं उनको मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज रूट, लीव्स, फ्लावर कॉमन इन टू डिफरेंट प्लांट्स। ये आपको एग्जांपल दे रहा है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में हम रूट्स को भी देख सकते हैं, अगर लीव्स को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स को भी देख सकते हैं, फ्लावर्स को भी देख सकते हैं, या डिफरेंट सेगमेंट्स और ऑर्गन्स को भी देख सकते हैं। तो later in the development of optical lens and the combination of these lenses to construction of compound microscope, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुई। यहाँ लेंस का पहले इस्तेमाल किया गया, उसके बाद माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल जिसे हम सिंपल लेंस कहते हैं, और उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गई। तो ये विद द पैसेज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टाइम इनमें एडवांसेस आ रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपी में ये बहुत एडवांसिंग फील्ड है। सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द वर्क ऑफ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक पहला वो शख्स था जिसने सेल की टर्म को कॉइन किया इन 1665 व्हेन ही वाज एग्जामिनिंग अ स्लाइस कट फ्रॉम अ पीस ऑफ ड्राइड कॉर्क अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच वर बिल्ड बाय हिम। जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे पीस ऑफ कॉर्क को देखा तो उसे हॉलो स्ट्रक्चर्स नज़र आए। उसने उनको सेल का नाम दे दिया गया। उसने कहा हर चीज़ छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे प्रेजेंट होती है, जिन्हें उसने सेल बोला। उसके बाद एंटोनी वन लेवन हुक है, वो पहला शख्स था जो जिसने अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर, जो उसने ख़ुद तैयार की हुई थी, उसके अंदर फ्री लिविंग सेल्स को देखा, और उसने सर्टन ड्राइंग्स ड्रा की या स्केचेस ड्रा किए जो कि आजकल के जो बैक्टीरिया हैं जैसे बेसिलाई, कोकाई, स्पाइरेला और प्रोटोज़ोआ, रोटिफाज और हाइडा, इनसे मैच करते हैं। So next I am moving towards the work of Robert Brown. He coined the term nucleus. He was the first person who observed nucleus. For example, epidermis, stigmas, pollens, um, pollen grains,
इन तमाम सेल के न्यूक्लियस उसने ऑब्जर्व किए. सो next I am moving towards the cell theory. Cell theory is comprised of three basic statements. All organisms are made up of one or more cells and cell products. जितने ऑर्गेनिज्म हैं, बेशक वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं, तो ये तमाम के तमाम सेल से कंपोज होते हैं या सेल की प्रोडक्ट्स से कंपोज होते हैं. All metabolic reaction in unicellular and multicellular organism take place in cells. जितने भी metabolic reactions होते हैं, metabolic reactions वो reaction होते हैं जिसमें anabolic reactions होते हैं, catabolic reactions होते हैं. एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें डिफरेंट मालिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके लार्जर मालिक्यूल्स बनाते हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में लार्जर मालिक्यूल्स स्मॉलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं या टूट के कन्वर्ट हो जाते हैं. सो I am not going to discuss what are metabolic reaction and anabolic or catabolic reactions. I actually explained what is metabolic reactions. So all metabolic reaction in unicellular and multicellular organism take place in cell. जितने भी catabolic या anabolic reactions होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के सेल्स के अंदर टेक प्लेस होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर टेक प्लेस होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम अदर सेल्स. व्हाट डज इट्स मीन? नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली एट डी नोवो. कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो खुद ब खुद नया जनरेट हो जाए. सेल को अगर जनरेट होना है तो जो प्रीवियस सेल है उसके डिवीजन से जनरेट होगा. ओके, so I am moving towards the next slide, that is viruses an exception to cell theory. How viruses are an exception to the cell theory? Actually, before discussing, I am going to discuss the true cells characteristics. What are the main characteristics of a true cell? Actually, a true cell should have these three main characteristics. The first one is a set of genes. एक ऐसा सेट ऑफ जीन्स होना चाहिए जो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे. वी नो दैट जीन्स आर द हेरिडिटरी मटेरियल. जीन आर द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल. सो वो जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर हों उनको कंट्रोल करने के लिए एक सेट ऑफ जीन्स होना चाहिए. उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए दैट परमिट्स कंट्रोल्ड एक्सचेंज विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. व्हाट डज इट्स मीन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली आउटर बाउंड्री ऑफ सेल है जो कि कुछ सब्सटेंसेस को आपस में अपने में से गुजरने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को अपने में से नहीं गुजरने देती. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं. अब मेटाबॉलिक मशीनरी जो कि सस्टेनिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर ऑफ पार्ट्स. एक मेटाबॉलिक मशीनरी भी होनी चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर सेल के अंदर कोई डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर कौन करेगा? वहाँ अगर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है तो वो सेल की डेथ हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो सेल में एनर्जी कौन दोबारा जनरेट करवाएगा? तो इसलिए मेटाबॉलिक मशीनरी का भी होना लाजमी है. These are the three main characteristics of a true cell. What are these characteristics? The first one is set of genes should be present. The second one is plasma membrane should be present. And the third one is metabolic machinery should be present. So, why viruses are an exception to cell theory? The first point, viruses lack a plasma membrane. Viruses don't have any plasma membrane. They have a capsid which is composed of different kind of biomolecules. A metabolic machinery for energy production and synthesis of proteins. And there is no metabolic machinery for appearance and other processes, so we consider them at borderline between living organisms and non-living organisms. लेकिन वायरसेस के कुछ करेक्टरिस्टिक भी हैं जो उनके पर्सनालिटी का पार्ट है, लाइक अ डेफिनेट जेनेटिकली डिटरमिन्ड मैक्रोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. इसी वजह से हम उसे
लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मैक्रोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है सम हो उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिविंग बना देती है, लेकिन नॉन लिविंग सबस्टेट्स के ऊपर वो नॉन लिविंग होता है. दैट्स वाई वी कंसिडर इट एज अ बॉर्डर एट अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. A genetic or a hereditary material in the form of either DNA or RNA is present. उसके अंदर DNA होता है, RNA होता है. फॉर एग्जांपल if I am going to discuss influenza virus contain RNA, and herpes virus I think it contains DNA. A capacity of auto reproduction. Viruses have the capacity of reproducing similar organisms to themselves. What does auto reproduction? खुद ब खुद ये कैपेसिटी है कि आपने जैसे ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सके. सो द नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ म्यूटेशन इन दैट जेनेटिक सब्सटेंसेस. म्यूटेशन भी बहुत ज़रूरी. म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, और वायरसेस अपना जेनेटिक मेकअप इतनी जल्दी चेंज करते हैं कि फ्यू सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं, फ्यू मिनट्स में अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेते हैं. उसकी वजह यह है इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ है, और इसीलिए वायरसेस की डिजीज़ को ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया की भी डिजीज़ समटाइम रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह यही है, डिफरेंट ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह यही है कि वायरसेस या बैक्टीरिया म्यूटेट करके अपना जीनोम म्यूटेट करके उसके बाद रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनका ऐसा जेनेटिक मेकअप बन जाता है कि कोई भी ड्रग या कोई भी केमिकल सब्सटेंस उनको किल नहीं करता. आउटसाइड होस्ट वायरसेस आर जस्ट लाइक नॉन लिविंग inert particle, they can be purified or crystallized. जैसे कि मैंने बताया कि नॉन लिविंग सबस्टेट के ऊपर वायरसेस नॉन लिविंग एक्ट करते हैं, और जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लिविंग बन जाते हैं. सो वी कंसीडर दैम एट बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म थ्योरी? एक्चुअली before discussing what is protoplasm, I am going to discuss what is nucleoplasm. हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के सेंटर में या प्लांट के केस में वही न्यूक्लियस एक साइड की तरफ पुश हुआ होता है, क्योंकि प्लांट्स के केस में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है. तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म इज एक्चुअली द फ्लूइड और द प्रोटोप्लाज्म विच इज़ फिल्ड इन द न्यूक्लियस. और ये ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल भी मूव कर रहा होता है, न्यूक्लियोलस भी मूव कर रहा होता है. तो वो मटेरियल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. Similarly, what is cytoplasm? Cytoplasm is the protoplasm that exists between the nucleus and plasma membrane. Plasma membrane is the outermost boundary of the cell. And what is the membrane of the nucleus? Actually इन दोनों के दरमियान जो मटेरियल प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस की बाहर वाली साइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड, इन दोनों के अंदर जो मटेरियल या फ्लूइड प्रेजेंट होगा, फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म. ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म. तो हम उसे कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का कम्बिनेशन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का कम्बिनेशन प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, that is these are just different techniques, you can read them. Types of cells. What are types of cells? There are actually two main types of cells. One is prokaryotic cell. For example, various types of bacteria. It's an example of prokaryotic cells. Prokaryotic organisms include bacteria and cyanobacteria.
So what is the size of the prokaryotic cells? In these are small size, diameter between 1 to 10 micrometer. Their shape may be spherical, they may be rod, or they may be spiral. Cell wall and capsule, except genus Mycoplasma, all bacteria have rigid cell wall. Mycoplasma don't have any cell wall. Actually, their outer most layer is plasma membrane. So always remember that genus Mycoplasma bacteria don't have cell wall. Um, and moreover, cell wall of the bacteria is made up of peptidoglycan, and that provides structure support to bacteria. Outside cell wall, mostly capsule is present, and sometimes capsule are present, sometimes and they may not be present. But cyanobacteria has a gelatinous layer, slime layer. Slime actually इसकी नेचर जिलाटिनस होती है, जेल काइंड जेल की तरह का होता है, that can be easily removed. And slime is the outermost layer. Then if slime is not present, then capsule may be present or may be absent. If it is also not present, then peptidoglycan is present, and under the peptidoglycan layer there may be plasma membrane or other membranes. Okay, so always remember that slime is the outermost layer, and capsule is if slime is present, then capsule always lie under the slime layer. Uh, I hope you get this point. So I am moving towards the next point, that is plasma membrane. Similar to eukaryotic but has no sterols. Actually, plasma membrane is the outermost boundary of cell. In the next lecture, I will discuss what is the composition of plasma membrane or what are the main properties of plasma membrane. But you have to just remember here what is the structure of bacterial plasma membrane. Bacterial plasma membrane don't have sterols, while eukaryotic plasma membrane have sterols. Okay, this is the one basic difference between the plasma membrane of bacteria and eukaryotes. Know what are sterols? Sterol may be cholesterol and many other chemical. Um, and ratio of protein to phospholipid is high. Always remember that in case of prokaryotic cells, ratio of protein to phospholipid. What does it mean? Protein are higher in number in case of bacteria, high in concentration in case of bacteria, but phospholipids are lower in concentration in case of bacteria in ratio 2 ratio 1. Similarly, in case of eukaryotic cells, 1 ratio 1 is present, because in case of eukaryotic organisms, 47% almost cell plasma membrane composition is 47% phospholipid and 50% protein. So it's almost 1 ratio 1 in case of eukaryotes, but in case of prokaryotes, protein are higher in concentration and phospholipids are lower in concentration. Protein is 2 times greater in concentration to phospholipid. So next I am moving towards the organelles which are absent in case of prokaryotic cells. Um, they don't have any mitochondria, Golgi bodies, and endoplasmic reticulum. Their function is performed by plasma membrane. So actually all those functions that are performed by these kind and these organelles, and they are no, in case of bacteria they are the part of, they are performed by actually plasma membrane. So plasma membrane contain enzymes for respiratory metabolism, as well as photosynthesis, lipid metabolism, and DNA synthesis. So what plasma membranes sometimes fold inward to form mesosomes, etc. These are some enfolding structure which are present in case of prokaryotic cells, and they are very important structures. We will discuss one by one all of them in next lectures. Okay,
So in case of prokaryotic cells, the ribosome size is 70S. S stands for Svedberg unit. Chromosome, actually they have circular chromosome, have no histones and no introns. Actually their chromosome are known as plasmids, and they don't have any histone proteins and intron proteins. What are introns? And actually you have to discuss what is the difference between introns and exons. Always remember that introns are the non-coding region and exons are the coding region of the DNA. ओके, अब इससे क्या मराद है, इंट्रॉन्स कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसी रीजन्स हैं डीएनए की जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, और एक्सॉन्स वो वाली रीजन हैं जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं। और आलमोस्ट 20,000 प्रोटीन्स की काइंड है, दे आर फाउंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो वो 20,000 प्रोटीन की जो काइंड है वो फ्यू एक्सॉन से कंट्रोल होती हैं, और उनकी और इंट्रॉन्स किसी भी रीजन को कोड नहीं करते, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, और दे आर नॉन कोडिंग रीजन्स वाइल एक्सॉन्स आर कोडिंग रीजन्स। दे आर आल्सो नोन एज इंट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज स्प्लिट जीन्स present in cytoplasm in a region called nucleoid. Actually plasmids are present in almost center and this region. Here you can see my cursor, and here you can see its nucleoid region, and plasmids are present here. Actually it's a circular DNA molecule. No nucleolus, there is no nucleolus is present, no nuclear membrane, no nucleus is present in case of prokaryotic cells, and there is no nucleolus. Genes are organized in ऑपरांस। ऑपरांस में जीन अरेंज होते हैं। ऑपरांस को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट है, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट आई एम मूविंग टूवर्ड्स फ्लैजेला एंड फिम्ब्री। फिम्ब्री यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अटैचमेंट रिस्पेक्टिवली। फिम्ब्री आर used for attachment while flagella are used for locomotion. Always remember this. Flagella have the function of they have locomotory functions. On the other hand, fimbri have attachment function to different substrates at different sites. How they reproduce, that is amitosis. What does the meaning of amitosis? Amitosis means they split into two by the process of binary fission for division. Now the next is stored material, and the stored material for energy in case of prokaryotic cell is polymerized fatty acids, glycogen, starch, phosphate granules. Here you can see a structure of bacterium, and that is a capsule, then cell wall, plasma membrane, ribosomes. Always remember that ribosomes are present in both eukaryotic cell as well as prokaryotic cell, but there is one difference between the ribosome of prokaryotic cell and eukaryotic cell. What is that difference? In case of prokaryotic cell it is 70s particle, and but in case of eukaryotic cells it is 80s particles, and these are mesosome, which are the invagination of the plasma membrane. Here you can see it is a invagination of the plasma membrane, or it is the extension of the plasma membrane. So these are small structures known as fimbriae, which can be used for the attachment purposes. And there is a basal body hook of flagella. Actually flagella is attached with the help of a hook, and then attached to the plasma membrane with the help of basal body, and uh, from here there are certain cytoskeletal elements are also found. Now I am moving towards the plasmid as well as cytosol, nucleoid, cytoplasmic lamella. Okay, so I am moving towards the next article, that is eukaryotic cell. So what are eukaryotic cells? Eukaryotic cells have the following characteristics. First, he is discussing what is plasma membrane.
Actually, eukaryotic plasma membrane is a phospholipid bilayer with protein layers embedded in phospholipid bilayers. It controls movement of molecules in and out of the cell and function in cell signaling and cell adhesion. We will discuss all these functions in later lectures of this chapter. So what is next? That is mitochondria. Mitochondria is a membranous organelle. Always remember that there is no membranous organelle found in case of prokaryotic cell except ribosomes. The ribosome is also not a membranous, but it is a particle. You can say it's a 70s particle and it's an 80s particle, but except ribosomes, there is no other organelle found in case of prokaryotes. All these organelles are present in case of just eukaryotes. Mitochondria, lysosomes, nuclear envelope is also present in case of eukaryotic cells. Nucleolus, nucleus, and many other organelles are just only present in case of eukaryotic cells. So, what is mitochondria? Mitochondria is also known as the powerhouse of cells, which is surrounded by a double membrane, generates ATP by oxidation of glucose and fatty acid. Actually, mitochondria is the organelle that is involved in different cellular processes such as Krebs cycle as well as cellular respiration, electron transport chain, and it is involved in the metabolic processes of glucose. Okay, so I am moving towards the next. What is lysosome? Lysosomes contain certain enzymes that are involved in the degradation of certain worn out part of the cell, as well as cellular membranes and organelles. You can say it digests a few specialized worn out part of the cell. So it has acidic lumen, and always remember that uh, due to its acidic nature it can digest certain particles which are present in case of um, which are present in the boundary of cells that are not functional, so it have to destroy and all those portions just for the process of homeostasis. So next is nuclear envelope. That is a double membrane encloses the contents of the nucleus. The outer nuclear membrane is continuous with the rough endoplasmic reticulum. Actually, nuclear envelope is double membranous layer. When I will discuss nuclear envelope, I will show you how outer nuclear envelope give rise to endoplasmic reticulum. So we will discuss it in detail in the next lecture. Nucleolus is a nuclear subcompartment where most of the cells are ribosomal RNA is synthesized. Always remember that nucleolus is is the factory of ribosomal RNA, and ribosomes are the factory of proteins. What? Nucleolus is the factory of synthesis of RNA, and what is the function of ribosome? Ribosome is the factory of protein. And next is nucleus. Nucleus filled with a chromatin composed of DNA and protein, sites of messenger RNA and transfer RNA synthesis. Always remember that nucleolus is the site of ribosomal RNA synthesis, while nucleus is the site of messenger RNA and transfer RNA synthesis. Then we know that there are three kind of RNAs. One is messenger RNA, the second one is transfer RNA, and third one is ribosomal RNA. So uh, two are synthesized in the nucleoplasm, and one is synthesized in nucleolus. Nucleolus is a dense region in the nucleus. So what is chromatin? Actually, chromatin is a thread-like structure which spreads throughout the whole nucleus, and it gave rise to chromosomes during the process of the cellular division. Always remember that chromatin composed of DNA and histone proteins. And the basic functional unit of DNA is gene, and different genes combine together. Different actually we call genes as exon, and they are the coding region of DNA. And so uh,
So always remember that gene are the basic functional unit of DNA, and DNA and proteins, histone proteins, combine together to form the chromatin, that is a thread-like structure. Here you can see animal cell. It's a nucleus. Here you can see these are endoplasmic reticulum, and this surface which is attached to the mm, nuclear membrane. The structure of endoplasmic reticulum, which is attached to the nuclear membrane, is the rough endoplasmic reticulum. Actually, it contains ribosome. There are two sides of ribosome in the cell. One is spread throughout the whole cytoplasm. The second major site of ribosomes in case of eukaryotic cell is the rough surface endoplasmic reticulum. Actually, due to the presence of the ribosomes at the endoplasmic reticulum, make it rough and make its appearance rough, so we can say it's a rough endoplasmic reticulum. And there is another um, endoplasmic reticulum known as smooth endoplasmic reticulum. They have different function. We will discuss one by one all of them in next lectures. So these are lysosomes, and this is Golgi apparatus that is also involved in the modification of certain uh, certain certain biochemical molecules which come from uh, endoplasmic reticulum. So here you can see it's mitochondria. Moreover, many other parts, chloroplasts are also present in case of plant cells. So I am moving towards the next article. You can see all these structures from internet. So what is a smooth endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulum synthesizes lipids and detoxifies certain hydrophobic compound, as I already mentioned that. And there are two kinds of endoplasmic reticulum. What is a smooth one is smooth endoplasmic reticulum, the second one is rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum contain can have certain functions such as detoxification of certain harmful drugs, lipid synthesis. On the other hand, rough endoplasmic reticulums are just involved in the protein synthesis because they have ribosomes at their surface, and they are involved in the synthesis of the different kind of proteins when a messenger RNA bind with the specific ribosome at the rough endoplasmic reticulum. So they sort out the proteins, lysosomal proteins, and certain membrane proteins. So next, actually plasma membrane proteins are formed at the surface of rough endoplasmic reticulum. So next is Golgi complex. Golgi complex are Golgi apparatus processes and sorts secreted proteins. वो प्रोटीन जितने जो सक्रीट होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सक्रीशन को जो मॉडिफाई करने वाला है, उनमें कुछ प्रोटीन्स या कुछ ग्लाइकन चेन ऐड करने वाला है. अगर प्रोटीन के मिसाल के तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जस्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. तो ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बनती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन जो ग्लाइकन चेन प्रोटीन्स में ऐड होती हैं वो गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर होती हैं. Next is secretive vesicle stores secreted proteins and fuse with the plasma membrane to release their content. And next is peroxisomes. Peroxisomes detoxify various molecules and also break down fatty acids to produce acetyl group for biosynthesis. Next is cytoskeletal fibers. We will discuss all of them in very much detail after few lectures. What is cytoskeletal fibers? There are certain cytoskeleton elements which spread throughout the whole cell, and these act as the skeleton of the cell, and they maintain the shape of the cells. They are also involved in the movement of the cells, and they are also involved in the sporting. They have sporting roles, organize organelle at their place, and participate in cell movement. So next is microvilli, increase surface area for absorption of nutrients from surrounding medium. And we have studied microvilli structure in case of digestive system.
So next is cell wall. Cell wall is composed largely of cellulose, help maintain this cell's shape and provide protection against mechanical stress. Always remember that there is no cell wall present in case of animal cells, and there is a cell wall present in case of plant cells. In case of animal cells, there is no cell wall, but in case of plant cells, there is a cell wall which is made up of cellulose. But in case of fungi, it is made up of chitin. Uh, and in case of bacteria, it is made up of peptidoglycan. Cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan. Cell wall of plants is made up of cellulose, and cell wall of bacteria, I discussed already bacteria, and cell wall of fungi is made up of chitin. So vacuole store water, ions, and nutrient, degrades macromolecules and function in cell elongation during growth. They have a supporting role in case of plant cells. Chloroplast are present in case of plant cells, and they carry out the photosynthesis and surrounded by double membrane and contain a network of internal membrane bounded sacs. And no envelop bounded organelles. Three organelles, mitochondria, chloroplast, and nucleus of eukaryotic cell, are bounded by an envelope that is a double membrane and contain genetic material. इनको हम enveloped organelles कहते हैं. An envelope consists of an outer membrane separated from the inner membrane by an intermembrane space. Each membrane is a lipid bilayer. All other membrane bounded organelles are enclosed in a single membrane and don't contain genetic material. एक्चुअली ये तमाम की तमाम ऑर्गेनेलिस बनी कैसे हैं, उसके लिए एंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. आई होप यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और इम्प्रूवमेंट के मतलब भी बता सकते हैं. और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. थैंक यू.